Yes, so I hope all of you can see the screen. Okay, so if we just draw the graph between the intensity and the angle of diffraction, then we already seen that graph looks like yes, this is what we have seen last time. And the graph looks like in this way, in which the central portion is just filled with the maximum intensity. This is called as the central maxima. This is called as the first minima, we can say. This is the first minima. This is the second minima. This is the third minima. Again, this is the first minima. Oh, sorry, maxima. This is the first maxima. This is the second maxima and third maxima on this side. And in the same way here, this can be supposed to be the first maxima on the opposite side. This is the second maxima and this is the third maxima on the opposite side. And what about minima? So we can just see this is the first minima. This is the second minima, we can say, and this is the third minima, and so on like this. And even in the opposite side also, this is called as a first minima. This is the second minima, third minima, and so on like so forth. So here we can just see these minima and maxima just produced alternately. तो वो alternately produce होते हैं, तो वो तो हमने already देखा भी था. बट यहाँ पे हमने उनको और एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि इनका जो एंगल्स है, जिस एंगल पे रेज बेंड होने से ये मिनिमा प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एंगल होता है लैम्बडा बाय डी, where lambda is the wavelength of light and d is going to be the distance, or we can say the slit width of the slit basically. तो इसी को आगे चल के हम अभी और आगे डिस्कस करेंगे कि let us draw the same diagram once again here. Suppose this is the width of the slit. Whose width is a. तो suppose यहाँ पे इस slit का जो width है तो वो a है, हम मान लेते हैं. और यहाँ से सीधा सामने हमने एक स्क्रीन रखा हुआ है. ओके, तो ये सपोज स्क्रीन है यहाँ पे. This is the screen which is kept at some distance like small d here, capital D here. तो ये जो capital D है distance, that is the distance of the slit and screen. तो slit और screen के बीच में ये जो है capital D distance है. Getting the difference between this small d and capital D, this small d is actually the slit width, the width of the slit. यहाँ से यहाँ तक का जो distance है तो वो actually small d है, लेकिन यहाँ पे जो distance हमको मिल रहा है that is going to be capital D actually here. So if we just consider the rays, तो यहाँ से जो निकलने वाले rays है तो जो कि पैरेलल जाएंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाएंगे यहाँ से, तो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से. These are the rays which are incident parallelly. So these are the parallel rays we can say. But the rays which bend through an angle theta with this horizontal, तो इसके साथ जो थीटा इतना एंगल करने वाले जो रेज है तो वो भी सीधा जाके इंटरफेयर करेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे. और सपोज वो फर्स्ट मिनिमा तैयार करते हैं. So suppose that here the first minima is produced on this side, and even at the same angle in the opposite side there will be a first minima produced here in this way. यहाँ पे भी फिर से हमको फर्स्ट मिनिमा मिलने वाला है ऑपोजिट साइड में. ओके, इन दोनों का एंगल जो है वो सेम ही है बिल्कुल. सो वी कैन जस्ट कॉल दिस एंगल टू बी थीटा. सो दिस एंगल विल एक्चुअली बी थीटा, वी कैन से, and this angle is also going to be theta. Now if suppose we consider this distance to be w, ये जो distance होता है, the distance of the first minima from the center is called as the w.
ठीक है ना, दिस इज द W। तो उस W को हम निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ठीक से एक सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे। ये थीटा का जो वैल्यू है हमारे पास, ये ऑलरेडी हमने लास्ट स्क्रीन में प्रूव किया था कि थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए और लैम्बडा बाय डी, नो डाउट। सो ये लैम्बडा अपॉन डी, ये वैल्यू थीटा का होता ही है, तो ये हमको पता है ऑलरेडी। बट इफ यू जस्ट सी द ज्योमेट्री ऑफ दिस डायग्राम, तो इस डायग्राम का ज्योमेट्री अगर ठीक से देखेंगे ठीक से, तो पता चलेगा कि देखो ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ कैपिटल डी के बराबर है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस कैपिटल डी वी कैन सी, एंड अपोजिट साइड ऑफ दैट this triangle is going to be W here. So can't we say that the angle is always equal to, जैसे कि हमको पता है ऑलरेडी कि angle is equal to the arc upon radius। ये एक important formula है angle के लिए। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा this theta will actually be equal to arc in front of that angle, which is this. If you just take this point O as a center, and if you just draw a circle like this passing through this point like this, it will be a very large circle actually, but that circle will have its radius capital D, and this part W of length W here will be a very small part of that big circle, and that's why it can be considered almost to be straight, and hence this theta equal to arc upon radius gives us simply this W upon this radius, which is capital D here in this case. So here if you just equate these two formulae for theta, तो ये जो फॉर्मूले थीटा के लिए हमको मिल रहे हैं, उन दोनों के लिए अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा W upon capital D is going to be actually equal to lambda upon small d, so that we can just get this W to be simply equal to lambda into capital D upon small d. So this is a very important formula for this in this diffraction here. So diffraction के अंदर ये जो W का फॉर्मूला है, this W is actually called as the distance of the first minima from the central maxima. If you just see on the graph, ये यहाँ पे अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखा तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा हमको। ठीक से थोड़ा इसको साइड में स्लाइड करेंगे, and now we'll just try to draw the graph here. So this graph will have its central maxima at this point here. Okay, यहाँ पे उसका central maxima रहने वाला है, तो मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहने वाला है इस पॉइंट O के ऊपर। अगर हम देखेंगे या P के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, बट एट द पॉइंट Q हियर ऑन द अदर साइड, यहाँ पे भी और उसी डिस्टेंस पे इस तरफ भी एक पॉइंट होगा, देखो Q डैश वी कैन से, द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, सबसे कम इंटेंसिटी वहां पे होगा। तो ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस, सो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो रीच अप दिस पॉइंट Q here, and it will again go on increasing further and reach maximum, and again it becomes minimum further. तो ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, और फिर सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा, एंड सो ऑन लाइक दैट, एंड द same here is the case in the opposite side also. तो ऑपोजिट साइड में भी हमको सेम वैसा ही ग्राफ मिलेगा, जो मिनिमम बनेगा एट दिस पॉइंट Q डैश हियर, एंड देन इट विल बिकम मैक्सिमम at particular point, and again will become minimum, and again becomes maximum and minimum alternately in this way. So अभी यहाँ पे इसमें देखो कि इस ग्राफ के अंदर अगर देखते हो ठीक से, तो ये जो है this is the first minima we can say, and this is the central maxima. So the distance between these first minima and central maxima on the graph is actually called as this W, which is called as the width. ठीक है ना, तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर का जो विड्थ होता है, this concept is very similar to the bandwidth concept of bandwidth, which we have already introduced in the interference case. Interference के अंदर हमने जिसको bandwidth बोला था, तो सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है, जिसको हम यहाँ पे सिंपली width बोल रहे हैं। ठीक है, और सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा बोला जा सकता है उसको। बट आफ्टर ऑल वी कैन एक्सप्रेस all the distances in terms of this W here now onwards. तो इसके बाद हम यहाँ पे सभी जो distances है तो वो W के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। Let us try to do that now. See here, suppose the same diagram
is just taken in the on the next page. ये पूरा जो है वो हम as it is copy करके next page पे ले लेंगे. ओके तो अभी इसमें देखो एक से कि ये जो फर्स्ट मिनिमा है यहाँ पे, तो फर्स्ट मिनिमा का जो डिस्टेंस है तो वो उसको हम W बोल सकते हैं. एंड दिस W हैज बीन ऑलरेडी प्रूव्ड टू बी इक्वल टू लैम्डा इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. करेक्ट है, ये हमारा W है. ठीक है, अभी अगर सोचो कि यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा जो है या सेकेंड मिनिमा जो है उसका डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो उसको अगर हम सपोज y बोल देते हैं. सपोज दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बिकम y. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से सेकेंड मिनिमा का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देंगे सर चाहिए तो y. ओके, सो दिस y कैन बी इजीली फाउंड आउट अगेन बाय अनदर ट्रायंगल हियर. तो अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, ये देखो ये वाला ट्रायंगल. अभी लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल हमको दिख रहा है, देखो दिस एंगल विल हैव टू बी कंसिडर्ड हियर. नाउ ये जो एंगल है ये हमको कंसिडर करना पड़ेगा. वी कैन कॉल इट एज थीटा 2d. ठीक है ना, थीटा 2d वी कैन से. व्हाट डू यू मीन बाय दिस थीटा 2d? थीटा 2d मींस सेकंड डार्क. ओके, 2 मतलब सेकंड एंड डार्क मतलब मिनिमा. ओके, क्योंकि ये फर्स्ट मिनिमा है, दिस इज द सेकंड मिनिमा. सो सेकंड मिनिमा का जो एंगल है तो वो हमको ऑलरेडी पता है कि सेकंड मिनिमा is formed due to the rays which bend through an angle 2 times of lambda upon d. Correct? This is the angle corresponding to second minima on the screen. Correct? Okay, but this angle can again be found out by using the arc upon radius ratio, or just as in your textbook it is mentioned, it is that this tan theta nd, and tan theta 2d can also be supposed to be same as approximately of as this theta 2d, which can be supposed to be actually tan मतलब क्या होता है, opposite side upon adjacent होता है. तो अगर हम यहाँ पे इस distance को अगर y2d बोल देते हैं, y2d, why y2d? Because it is the distance of second dark minima or second minima we can say. So y2d, so theta 2d will actually be equal to the distance y2d, and that is to be divided by capital D once again, because it is adjacent side. tan theta का definition वही होता है, opposite upon adjacent side. तो अभी यहाँ पे हमको एक ये थीटा का वैल्यू भी मिल रहा है इस तरफ से, और दूसरा ये थीटा का क्या भी और एक वैल्यू मिल रहा है इस तरफ से. तो दोनों थीटा के वैल्यूज अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो. सो वी कैन जस्ट गेट दैट y2d upon capital D is going to be equal to 2 times of lambda upon small d. When this capital D is transferred in that side, then we can be able to get the expression for y2d finally, which obtained as 2 times of lambda capital D upon small d. And I already remember that this lambda capital D upon small d is going to be w, right? So if you just replace it here, यहाँ पे अगर हम इस lambda into capital D upon small d को अगर w बोल देते हैं, तो y2d can actually be expressed as simply 2 times of w. Remember, so second dark band का जो distance है वो 2 times of w हुआ करता है. ये हमने इसमें से प्रूव किया. जबकि फर्स्ट डार्क बैंड का जो डिस्टेंस होता है तो वो लैम्डा डी अपॉन कैपिटल स्मॉल डी होता है. ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है. सो इन जनरल वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द nth डार्क बैंड नाउ. इफ सपोज वी हैव द सेम डायग्राम रिपीटेड हियर, okay, suppose this is the slit, and suppose that this is the screen here at some distance from the slit. Then we can see यहाँ पे हमको बिल्कुल सेंटर पे सामने हमको बिल्कुल सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगा.
ये तो समझ सकते हो आराम से. This is the central bright band we can say. Okay. तो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो इस तरह का कुछ हमको मिल सकता है ग्राफ. इसमें यहाँ पे हमको सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलने वाला है. Then alternately we can just say this will be the first, second, third and fourth minima like this, and the same thing happens in the opposite side also. Okay. So in general, if we have this point which is at some distance and it is suppose the distance of nth dark band. Okay, suppose वो nth dark band है तो उसका जो distance होगा यहाँ से center से, तो उस distance को हम बोल सकते हैं यहाँ पे y_nd. Why? Because y_nd का मतलब क्या होता है? y means distance and n means nth and d मतलब dark. So this is going to be the distance y_nd we can say. And if we just join this point with this nth dark band here on the screen, then we can just get an angle. This angle will actually be denoted by theta nd. Again n का मतलब है number, nth dark band, तो इसलिए nd का मतलब nth dark band का distance और angle. Okay, so already as we have already proved that this theta nd मतलब nth dark band का जो angle होता है तो वो n times of lambda by a या lambda by d हुआ करता है. ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है. ठीक है. बट फ्रॉम द डायग्राम हियर if we just see this triangle then we can just get that tan theta nd मतलब tan of this angle theta nd can be obtained to be simply equal to opposite upon adjacent, but opposite is nothing but y nd and this adjacent is nothing but capital D, which is the total distance between the slit and screen here. But as we can say that this tan theta, ये थीटा छोटा होने की वजह से tan theta nd and the angle theta nd itself are going to be very equal, approximately equal, and because of that we can just replace one for another, and hence we can get that this theta nd which is going to be equal to simply y nd upon d, capital D, from which we can get another equation for theta nd. तो ये जो है ये दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया थीटा एंड डी के लिए, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, and this equation number 1 is already there. So if we just equate this equation number 1 and 2, then we can just get that this y nd upon capital D is going to be actually equal to n times of lambda upon small d, which gives the value, actual value of y nd, which is going to be, तो यहाँ से हमको मिलेगा y nd का वैल्यू, अगर स्मॉल कैपिटल डी को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा n lambda capital D upon small d. This is actually going to be the value of y nd in terms of n. So but already we have just proved that this lambda into capital D upon small d is nothing but w. So if we just recall that and just replace it by that here, तो अगर उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे कि लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी मतलब क्या होता है, W होता है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, y n d का जो वैल्यू है वो सिंपली n टाइम्स ऑफ W मिल जाएगा. तो ये देखो, दिस इज द समराइज्ड इक्वेशन ऑफ ऑल दिस व्हाट वी हैव डन सो फार. तो अभी जो भी हमने किया है तो उसका एक समराइज्ड फॉर्म जो है इक्वेशन का वो ये है. ठीक है, अब ये चलो हो गया डार्क बैंड का, बट वी कैन जस्ट do the same thing for bright band also. तो bright band के लिए अगर हमने ये सब करने के लिए अगर ट्राई किया तो देखो क्या होगा. So let us copy the same diagram once again to the new page. Suppose that here again this is the slit. This is suppose the slit and this is the screen. And suppose on the screen the central bright band is formed just in front of this center of the slit here. Okay, and suppose that the graph of intensity
with respect to the distance comes out to be like this. तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हमको मिलने वाला है इस तरफ फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा सेकंड मैक्सिमा हमको मिलता रहेगा ऑल्टरनेटली इस तरह से. ठीक है, अभी जस्ट फॉरगेट अबाउट द ग्राफ and suppose that this is the point on the screen at which suppose we get the nth bright band. Suppose यहाँ पे देखो NB, YNB का मतलब क्या होगा यहाँ पे ब्राइट बैंड का nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है पूरा तो वो एक्चुअली YNB रहने वाला है. So if we just have this Y and B, B matlab bright, and then we can just say that this angle corresponding to this distance is going to be theta NB actually, theta NB. And जैसा कि हम already जानते हैं कि condition for bright point in case of diffraction pattern is that for maxima कभी मिलता है हमको when theta is going to be equal to 2n plus 1 into lambda by small d. याद रखो ठीक से. Just because the condition for maxima here in case of diffraction is just simply d sin theta must be equal to 2n plus 1 into lambda. करेक्ट है. इस कंडीशन को ही हमको अगर सपोज और ज्यादा इक्वेट या एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्मॉल डी को नीचे लेके जाने से हमको ये मिलता है 2n plus 1 into lambda by small d, 2d. ओके, lambda by 2 का ऑड मल्टीपल होना जरूरी होता है वो, तो इसलिए वो lambda by 2d के बराबर बनता है. So this is the condition for sin theta, but as we know that this when theta is very small, this sin theta just becomes equal to theta, and hence theta can be written to be simply equal to 2n plus 1 into lambda by 2d. Remember, so this is the condition for nth bright angle. ठीक है, तो nth bright band का जो एंगल बनता है तो वो यहाँ पे हमको मिलता है इस तरह से 2n plus 1 into lambda by 2d. ओके, तो ये एक तरफ हमारे पास है ऑलरेडी. अभी अगर दूसरे तरफ हम अगर देखेंगे कि ये जो एंगल है तो ये एंगल हम ट्रायंगल से भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास tan का डेफिनेशन है. What is the definition of tan of theta? It is just opposite upon hypotenuse and opposite upon adjacent, and adjacent is nothing but capital D. So if we just replace it by them here, then we can be able to get this tan theta to be simply equal to the distance, opposite distance, which is YNB, and that is to be divided by capital D here. And since theta is very small, this tan theta can be written to be same as theta only, and hence we can just be able to get that tan theta NB to be simply equal to YNB upon D, capital D, where YNB is the distance of nth bright band from the center. So if we just equate these two values of theta NB which are obtained here, we can just record it as the equation number 1 and this is equation number 2, and from 1 and 2 we can just get that. See here, YNB upon D comes out to be simply equal to, तो यहाँ पे भी उस तरफ क्या रहने वाला है, ये पूरा जो है 2n plus 1 into lambda into by 2d ये यहाँ पे आ जाएगा. So we can just put it here and get that 2n plus 1 into lambda by 2d. Yes, and then we can just be able to simplify this further. तो इसको अगर हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ये कैपिटल डी को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा हमको. तो इससे हमको मिलेगा YNB which is equal to 2n plus 1 into lambda into capital D upon 2 times of small d. And now if we just try to simplify this still further, then we can get that YNB which is going to be equal to, तो यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 को इस तरफ अंदर ब्रैकेट के अंदर भेज दो, इससे वो बन जाएगा 2n by 2 plus 1 by 2 again, and that is multiplied with
lambda into capital D upon small d, so that we can just get that y nb to be simply equal to, this 2 will get cancelled, and what we will left with is simply n plus half in the bracket, and outside the bracket lambda into capital D upon small d. Again we can just recall that w, ये जो lambda into capital D upon small d होता है, इसी को तो हमने w बोल के रखा है already. So if we just express in terms of w, then we can just get that this y and b, the distance of nth bright band in case of diffraction pattern happens to be actually equal to n plus half into w simply. So this is the formula for y and b in terms of w. Okay, so this is the important derivation for expression of the bright band, nth bright band from the center in case of diffraction pattern. So what is the summary of all these things which we have done so far? तो summarize form में हम ये बोल सकते हैं कि distance of nth dark band, as we can see on the diffraction pattern, can be simply said to be equal to n times of w, and the distance of nth bright band from the center of the diffraction pattern can be supposed to be simply equal to n plus half into w. Okay, तो ये दो फॉर्मूले याद रख लो, इन दोनों में सारे फॉर्मूले उसमें आ गए, क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 डाल दिया तो इससे हमको फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस मिलने वाला है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा? कैन वी फाइंड आउट फ्रॉम द सेंटर? फर्स्ट मैक्सिमा मतलब फर्स्ट ब्राइट बैंड, राइट? सो 1b हो गया वो, तो इस फॉर्मूला के अंदर हमको n के बदले 1 डालना होगा. So if we just put n equal to 1 in this formula, then we can just be able to get that yb or y1b to be simply equal to 1 plus half into w, where 1 plus half happens to be 3 by 2 actually, and hence we can just be able to get that y1b to be simply equal to 3 by 2 into w. That's it. So this is the first bright band away. This distance is the distance of the first bright band from the center of the diffraction pattern. In the same way, y2b can be obtained here. How much it will be? y2b मतलब second bright band का distance कितना होगा center से? So we can express it in terms of w and get it as 5 by 2 times of w simply. It is very simple as that. So in this way we can just get the distance of any nth bright band from the center of this screen on the diffraction pattern in case of this diffraction pattern here. So this is all about the distances. Getting this? Any doubt about this? Just put it in the chat box if you have any doubt. Okay, no doubt. Okay, chalo, ठीक है. So let us see the next topic in this chapter. See what happens is, if suppose there is a point object at this point here. यहाँ पे एक suppose point object है यहाँ पे, ठीक है, और उसके सामने अगर हम एक लेंस रख देते हैं, ये suppose लेंस हमने रख दिया इधर, and suppose there is a screen kept in front of this object here at the focus of the lens, suppose. So what happens is, if suppose this point object emits the light, then also even if this point object doesn't emit the light, in that case also the light reflected from this object, point object, will just behave as if it is emitted by this point object only, and hence if this rays starting from this point object here just pass through this lens, then the rays passing through the lens on the screen will produce not only the image of that point object, but they will produce the diffraction pattern of that point object. तो मतलब यहाँ पे हमको जो मिलता है वो सिर्फ इमेज नहीं मिलता है. तुमने कभी देखा है
जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक इमेज अगर जब हम फॉर्म करते हैं लेंस के द्वारा स्क्रीन पे, तो स्क्रीन के ऊपर ना सिर्फ हमको एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिलता है, बल्कि उसके आसपास हमको एक रिंग भी मिलता है जिसको हम आभा बोलते हैं। तो कई बार उसको आभा बोला जाता है। लाइट के केस में आभा का मतलब पता होगा, क्योंकि तो कोई भी जो इमेज बनता है तो उस इमेज के आसपास एक ब्लर रिंग होता है, ठीक है, और उस रिंग के आसपास वापस एक ब्लर और थोड़ा फेंट रिंग हुआ करता है। That is the actually the diffraction pattern produced here. That means whenever diffraction pattern is formed on the screen of a point object here, then not only the image is formed, but the total diffraction pattern is formed at this point here. So that diffraction pattern can be just observed to be like this. ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से। उसका सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे फॉर्म होगा, फिर ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा हमको मिलते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। सो द होल डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन हियर इन दिस वे। ओके, इफ सपोज देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट केप्ट एट द सेम पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल साइड में अगर हमने एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट अगर रख दिया इधर, सपोज यहाँ पे हमने और एक ऑब्जेक्ट रख दिया इधर ऐसे, जो कि बहुत उसके नजदीकी है, तो उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट भी अपना एक डिफ्रैक्शन पैटर्न तैयार करेगा ऑन द सेम स्क्रीन। उसी स्क्रीन के ऊपर ये भी अपना एक डिफ्रैक्शन पैटर्न तैयार कर लेगा, और ये दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है तो वो अभी यहाँ पे जाके मिक्स हो जाएंगे, स्क्रीन पे जाके मिक्स हो जाएंगे। And when these two diffraction patterns just get mixed with each other, so the second diffraction pattern we can just show by green color. चलो ब्लू कलर से ही दिखा देते हैं। पहले वाला एक्चुअली हमको रेड कलर से दिखाना चाहिए था, बट जस्ट चलो इट्स ओके। ये चलो कर देंगे क्या, just forget about this. So now we can just see that on the same screen we are going to get two diffraction patterns which are formed due to the two different objects or point objects here. So ये जो रेड कलर का जो है उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा तो उसका ऐसा होगा, वो चीज सेंट्रल मैक्सिमा उसका यहाँ पे आएगा, okay. This is the diffraction pattern formed by this first object here, which is of red color. Okay, now we can just talk about the diffraction pattern formed due to this blue colored object. तो ब्लू कलर का जो ऑब्जेक्ट है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न भी उसी स्क्रीन पे फॉर्म होने जा रहा है, and both of these diffraction patterns will just get mixed with each other in this way. So इनका मिक्सिंग जो है वो अगर बहुत क्लोज है, बहुत नजदीक नजदीक, ये ऑब्जेक्ट जितने नजदीक रहेंगे उतना इन दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी नजदीक आएगा, करेक्ट है। और उसकी वजह से इन दोनों की मिक्सिंग जो है वो मिक्सिंग ऐसा होगा जिसके कारण हमको ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली दो नहीं बल्कि एक ही नजर आएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट्स भले दो है लेकिन उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है वो इतना घुल मिल जाएंगे कि वो एक ही ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न के जैसा हमको अपीयर करेगा, मींस वो लगेगा। तो उस केस में उसको हम बोलते हैं कि दीज इमेजेस आर अनरिजॉल्व्ड, उसको अनरिजॉल्व्ड इमेजेस बोला जाता है। अनरिजॉल्व्ड मतलब ये दो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है वो इतना अच्छी तरह से घुल मिल गए अंदर में कि हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिफ्रैक्शन पैटर्न कौन से ऑब्जेक्ट का है, जिसकी वजह से उसको हम बोलेंगे द इमेजेस आर एक्चुअली अनरिजॉल्व्ड। But on the other hand, if suppose the two diffraction patterns just get mixed with each other in such a way that we can just distinguish them clearly, अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न्स वो है तो वो अगर हमको इस तरह से अगर डिस्टिंग्विश करने आ रहा है तो उस केस में उसको हम बोलेंगे द इमेजेस आर वेल रिजॉल्व्ड,
जस्ट एज वी कैन जस्ट सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये जो साइड में डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है उसके अंदर देखो ठीक से, जो फर्स्ट डायग्राम जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, और जस्ट लेट अस slide this slightly. Okay, उस तरफ थोड़ा स्लाइड करेंगे इसको, so that this will be in the vision. Okay, so अभी इसमें देखो, इस डायग्राम के अंदर तुम देख रहे हो क्लियरली कि ये जो फर्स्ट डायग्राम तुमको दिख रहा है, फर्स्ट वाला डायग्राम जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है वो देखो कितना क्लियरली हम सेपरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न और ये ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हमको पता चल रहा है। और इनके जो इमेजेस है यहाँ पे देखो एक से, ये दोनों इमेजेस भी बिल्कुल जस्ट अलग अलग दिख रहे हैं, और इसलिए उसको हम बोलेंगे वेल रिजॉल्व। ठीक है, वेल रिजॉल्व। बट व्हेन दिस टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट देयर इज अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन, like we cannot distinguish whether these diffraction patterns are of two different objects or there is only one object, then in that case we can just say that these images are just resolved. Just resolved matlab these diffraction patterns are just mixed in such a way that there is a doubtful situation. Doubtful, कभी कभी हमको वो दो अलग अलग दिखेंगे, कभी वो हमको एक ही दिखाई देगा, तो उस केस में उसको बोलेंगे just resolved. But in the third case, if we just see here, then the two diffraction patterns are just very close to each other, and they are mixed in such a way that they appear diffraction patterns of a single object, and the image also appears to be the diffraction pattern of a single object only. So in that case we can just see that it is a image which is called as a unresolved. इसको बोलेंगे unresolved images. Remember, I have one more diagram of the same type. Yes, let us see it in the next page. देखो ये डायग्राम्स की तरफ देखो ठीक से, जितना ऑब्जेक्ट्स करीब आते जाएंगे तो उतना उतना उनके रिफ्रैक्शन पैटर्न्स भी आपस में घुलते मिलते जाएंगे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऐसा होगा कि हमको ये दो ऑब्जेक्ट्स दो नहीं बल्कि एक ही लगेंगे। तो जब तक ये दो ऑब्जेक्ट्स हमको दो पहचानने में आ रहे तो इसको हम बोलेंगे वेल रिजॉल्व्ड। Okay, these are the well resolved images, no doubt. But in this case we can just say that these are the just resolved images. Just resolved मतलब इसको हम just separate कर पा रहे हैं, लेकिन इस केस में separate करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे unresolved images. We cannot separate these two images from each other, and that's why it will be called as a unresolved images in this way. This is called as the Rayleigh's criteria. Remember, Rayleigh's criteria gives us the distinction between whether the two objects are resolved, well resolved, or unresolved, or just resolved in this way. देखो यहाँ पे ये डायग्राम को देख के भी हम आराम से ये समझ सकते हैं। Yes. Okay. Suppose that this is the diffraction pattern of one of the objects, and this is the diffraction pattern of another object. Now these two diffraction patterns are just coming closer. ये दोनों diffraction patterns जो है तो वो अभी आपस में मिलने जा रहे हैं, means ये दोनों नजदीक नजदीक आने वाले हैं. So if these two diffraction patterns come closer,